Hey everyone, Talha here from Geek My Day. I hope के आप सब safe हैं and you're all okay and you're staying at your houses. To be honest with you, this whole quarantine thing जो है इसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ों को ज़्यादा appreciate करना सिखाया है. So many things that I took for granted before. Things like hugging a friend, just appreciating the company of another human being and music. Honestly, अगर music ना होता तो I would have probably gone insane by now. म्यूज़िक ही वो चीज़ है दैट इज़ ब्रिंगिंग मी कम्फर्ट ड्यूरिंग दीज डेज. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आई हैव दीज Huawei Freebuds क्योंकि दे आर रियली मेकिंग माई लाइफ सो मच मोर बेरेबल एंड ईजियर. Huawei Freebuds 3 आर द लेटेस्ट वायरलेस ईयरबड्स फ्रॉम Huawei. इनकी कीमत है अराउंड 35,000 रुपीज़. आई नो कि इट साउंड्स लाइक अ लॉट, लेकिन ये प्रो क्वालिटी ग्रेड ईयरबड्स हैं और ये एप्पल एयरपॉड प्रो को कम्पीट कर रहे हैं, विच आर इवन मोर एक्सपेंसिव. And with all the features that these are giving, जो इसकी price है, it makes sense. Okay, so before we talk about the Freebuds, I want you to subscribe to my channel. और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं, then press the like button. Okay, let's talk about the Huawei Freebuds 3. सबसे पहले केस के बारे में बात करते हैं. जो ये केस है, it is made of plastic entirely. लेकिन it's very high quality plastic. इसकी जो hinge है, that's very well made. और इसको खोलना और बंद करना इज सो सेटिस्फाइंग. इट फील्स लाइक प्लेइंग विद अ जिपो लाइटर. द Freebuds जस्ट क्लैस्प इनटू द केस. इट फील्स मैग्नेटिक. इसके साथ एक LED लाइट है इंडिकेटिंग के ईयरबड्स चार्ज हो रहे हैं या नहीं. ऑन द बॉटम ऑफ द केस एक और LED लाइट है और ये इंडिकेट करती है कि केस चार्ज हो रहा है या नहीं. और इसके साथ एक USB Type-C पोर्ट है. USB Type-C पोर्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हो चार्ज द केस, लेकिन इसके साथ साथ द केस आल्सो सपोर्ट्स वायरलेस चार्जिंग. सो अगर आपके पास एक वायरलेस चार्जर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास एक फ़ोन है जिसके अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग अनेबल्ड है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो. ये फीचर स्पेसिफिकली आई रियली लाइक दैट फीचर क्योंकि फॉर मी चार्जिंग माई ईयरफोन्स इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. आई एम वेरी लेजी एंड आई जस्ट फॉरगेट अबाउट डूइंग दैट. और ये फीचर जो है ये मसला सॉल्व करता है. मैं ईयरबड्स और अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल सकता हूँ एंड दे विल जस्ट कीप चार्जिंग. देयर इज़ अनदर रीज़न वाई आई रियली लाइक दिस फीचर, और वो ये है कि जब पहला फ़ोन आया था जिसके अंदर रिवर्स चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ थी, द Mate 20, आई सजेस्टेड दिस फीचर. आई सेड कि ऐसा होना चाहिए कि आपके वायरलेस ईयरफोन जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से चार्ज हो जाएँ. एंड आई एम सो ग्लैड कि दैट बिकेम अ रियलिटी. इट मेक्स मी फील वेरी स्मार्ट. इफ़ ओनली आई हैड पेटेंटेड दिस आइडिया आई वुड हैव बीन अ मिलियनेयर बाय नाउ. बट खैर, let's talk about the appearance of the Freebuds. They call the design of these Freebuds the Dolphin Bionic design. There are no harsh corners. इसके ऊपर कोई harsh turns नहीं है, harsh corners नहीं है. It's all very curvy and they are very well made. जो मेरी पहली concern थी इन earbuds के साथ वो ये थी कि क्या ये मेरे कान में टिकेंगे, क्योंकि I go out for a run and I'm moving around a lot, so it's a concern कि नीचे ना गिर जाएं. But they don't. They are super comfortable. They fit right in और ये गिरते नहीं आराम से. नो मैटर जितना मर्जी मैं मूव अराउंड करूँ या जितना मर्जी मैं भागूँ, ये नहीं कान से गिरते. एंड दैट्स रियली रियली ग्रेट. आई लव दैट. ओवरऑल आई रियली लाइक द अपीयरेंस ऑफ दिस Freebuds एंड द केस. दे लुक ग्रेट, दे फील ग्रेट एंड दे डोंट फॉल डाउन. सो विन्स ऑल अराउंड. द Huawei Freebuds 3 come with Bluetooth 5.1 SoC और इसके अंदर एक 365 MHz Kirin Audio A1 प्रोसेसर है. दिस मीन्स कि जो Freebuds हैं दे गिव अ सीमलेस कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी डिले और एनी प्रॉब्लम्स. ऑल यू हैव टू डू इज़ आपने लिड खोलनी है, प्रेस द बटन फॉर 3 seconds एंड देन कनेक्टेड विद द ब्लूटूथ ऑन योर फोन. इसके साथ साथ आप Huawei की AI ऐप डाउनलोड कर सकते हो. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ फीचर्स. ये जो ऐप है इट शोज़ यू कि हाउ मच बैटरी इज़ लेफ्ट इन बोथ ऑफ द Freebuds और केस के अंदर कितनी बैटरी रहती है. एंड यू कैन असाइन शॉर्टकट्स थ्रू डबल टैपिंग द ईयरबड्स. यू नो लाइक पॉजिंग और प्लेइंग द म्यूजिक और स्किपिंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग या टर्निंग ऑन द वॉइस असिस्टेंट एंड इवन मोर. देयर इज आल्सो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन एंड यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू वट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. आल्सो जो नॉइज कैंसिलेशन है इट वर्क्स बोथ वेज. सो अगर आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं तो इट विल रिड्यूस द नॉइज फ्रॉम योर एनवायरनमेंट एंड मेक योर साउंड क्लियर जिससे आप बात कर रहे हो उसके लिए. दिस डज वर्क ग्रेट क्योंकि जो मैंने इनके साथ कॉल्स की हैं आई डू गेट कॉम्प्लीमेंट्स कि मेरी वॉइस जो थी वो काफ़ी क्लियर थी. सो दिस फीचर डज वर्क. ऑल ऑफ दैट एंड मोर कंबाइंड गिव्स यू अ रियली रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस. और जो साउंड क्वालिटी है दैट इज़ फैंटेस्टिक, स्पेशली द बेस. द साउंड इज़ वेरी क्लियर. इवन अगर आप म्यूज़िक को फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हो तो इट्स स्टिल वेरी वेरी क्लियर
एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एज आई सेड कि म्यूज़िक जो है वही अभी आजकल ऐसी चीज़ है दैट इज़ हेल्पिंग मी गेट थ्रू क्वारंटीन. नाउ नो मैटर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक. I'm a bit of a fan of the philosopher Albert Camus, and his philosophy essentially boils down to enjoy what you do. If you're doing something really small and mundane, try to make it fun. So whatever I'm doing, whether I'm running or cleaning my room or just doing my workout finish dance, I'm listening to music. And it really just makes everything so much better. So overall, I really like these earbuds. The connectivity is great, the sound quality is great, the features are really innovative and good, and they are very high quality. Just a very well thought out product. If you are looking for getting professional earbuds, I don't think you can go wrong with these ones. Thank you for watching. If you like this video, then please press the subscribe button, and I'll see you in the next one. Peace.